Good morning. The last lecture we were discussing about APCDs. If you remember, APCDs, air pressure control devices. Now, air pressure control devices, again I'm repeating once again, are those basically which are meant for removal of the air pollutants from the gases streams. Like what are the gases being released by the industry? They may contain gases, pollutant, as well as particular pollutants. So both these kind of pollutants are being removed with the use of APCD. Now it's mandatory for each and every industry, wherever you go in your mechanical industry, to work, for train, anything, you will find there should not be any industry. In fact, I can say there is no any industry without APCD, air pressure control devices, because you cannot as such release a pollutant into the atmosphere, which I have discussed with you. You need to treat them, whether it is air or it is water. सो वाटर के लिए मैं बता चुका हूं आपको, बेटा आपको एसटीपी लगाना पड़ेगा, एटीपी लगाना पड़ेगा, effluent treatment plant or sewage treatment plant. Similarly, if you're releasing the gases, and by default gases are being released, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो चाहे जो सी मर्जी इंडस्ट्री हो, गैस रिलीज होनी है उस इंडस्ट्री से. So for that you need to install APCD, air pressure control devices, and this air pressure control devices, I think so, depending upon application कि आपको remove क्या करना है, ठीक है, that can be implemented accordingly. So if you remember, when I started with the APCD, I told you the gravity setting chambers. These are the gravity setting chambers. I have explained to you in detail in the last lecture. Then after this, we discuss about cyclones. If you remember, cyclones, see this. So cyclones are basically effective for removing the particle size. If you remember, I told you dust particles is near about 25 micrometer. Okay. So this is a particle size which cannot be removed by the gravity setting chamber, but they can be removed by the cyclone. But in the cyclone you need to give the extra power, because if you remember, we have to give the air so that it will enter with force tangent to the equipment, so that it will start moving in a circular motion, so that the particle present in the this air will have a will exert a centrifugal force. They will be thrown outward. One thrown outward will be collected at the bottom, and the free air free from the dust particles, air free from this kind of dust particles, will travel from the inner vortex from this out. Okay. So these are the industrial applications of APC, this cyclone separator. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी बेटा लास्ट टाइम कि सीमेंट इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, जहां पे स्मॉल पार्टिकल यूज होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल यूज होते हैं, वहां पे हम ये चीज यूज करेंगे. ओके. So these are the advantages and drawbacks you can go for. Okay, there's no moving parts, less maintenance cost, it no treatment required, small space requirement. Even as for small space you can install this APCD, that is called cyclone separator. But there are disadvantages. When the particle size is less than 10 micrometer, 10 micrometer, you cannot use the cyclone separator. You cannot use cyclone separator. Okay. Moreover, if the particles have sticky nature means इसमें moisture हो, ठीक है, they have a, they are going to provide the hindrance. Why? Because once I show over here, once particles are sticky, they will be sticking towards the walls, so they will be not easy sliding down to get out from the bottom. So it's not very effective for the sticky particles. Okay. So is that okay? Pressure drop is high, no doubt. When you're working with a high particular, flow rates, all kind of things, pressure drop is high. It's very costly to operate. Now another APCD is bag house. What is bag house? पढ़ लो, समझा रहा हूँ इसके बारे में आपको डिटेल में. अब क्या है बैग हाउस बेटा, क्यों मैं सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, पहले ये ध्यान से रखना. आपको पता है मैकेनिकल के बच्चे हो बेटा, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज. सो डिफरेंट मशीन्स आर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है. तो कुछ फाइन प्रिसीजन के लिए होती हैं, कुछ कोर्स प्रिसीजन के लिए होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रिसीजन के लिए होती हैं. Okay. So same thing is here in APCD also. When you want to remove the coarse materials like heavy particles, that can be removed with the gravity setting chambers. Then intermediate cyclone separator. Then very fine particle size, less than 10 micrometer, which are not easily removed by the cyclone, can be removed by the fabric collector called a bag filter or bag house. Okay. What is bag house? मैं कुछ समझा दूं बेटा, फिर आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी. इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना.
देखिए बेटा मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, आपके पास एक होलो स्टील थंबल होता है, होलो स्टील पाइप लगा लो, पाइप ही लगा लो आप। ठीक है जी। तो होलो मीन्स इसके बीच में होल रखे हैं। ओके, इसमें होल्स रखे हैं, परफोरेटेड, दिस कॉल्ड परफोरेटेड। कैसी परफोरेशन? जैसे यू मस्ट हैव सीन बाउंसरी, दैट बाउंसरी पे जो ऊपर होल हो रखे हैं, नीचे होल हो रखे होते हैं। तो सेम हमारी एक पाइप अज्यूम कर लो, स्टील पाइप अज्यूम कर लो, जिसमें होल्स हो रखे हैं, इसका परफोरेशन। और ऐसे आपके पास मल्टीपल हैं, 5-6 हैं, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, सब में होल हो रखे हैं। तो इस होल परफोरेटेड पाइप जो है, इसके अराउंड में एक बहुत फाइन मेम्ब्रेन रैप कर दूंगा। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, आपको पता है, फिल्टर करने के लिए। ओके, तो मेम्ब्रेन रैप कर दी इसके बीच में। तो जैसे मैंने मेंबर्स रैप कर दी, तो ये सारे आपके एक कलेक्शन मैकेनिज्म बन गया। तो इसको मैं एक चैम्बर में डाल दूंगा, तो चैम्बर जैसे डालूंगा वो बन जाएगा बैग हाउस। तो ये बैग हाउस है। तो देखो इसमें ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3, ये वही स्टील पाइप्स हैं, फ्रंट व्यू है, ये वही स्टील पाइप है जो परफोरेटेड है, जिसके अराउंड आपने मेम्ब्रेन रैप कर रखी है, फाइन मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन कौन सी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पार्टिकल्स रिमूव करने हैं आपने। तो वी वांट टू रिमूव पार्टिकल साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। अब क्या होगा, dirty air will come with flow rate, exactly flow rate, with the help of blower. So you exert some force on the dirty air so that it can flow inside with force. So once it's flow inside with force, it's going to strike these thimbles. I can say this is thimbles, or steel pipes. जो जैसे इसको स्ट्राइक करेगी बेटा, क्या होगा, तो इसके बाद मेम्ब्रेन रैप है, तो मेम्ब्रेन के अराउंड आपका ये डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे। कौन से, जो उसमें पास नहीं कर पाएंगे। तो वेरी फाइन साइज पार्टिकल्स, sorry, very fine size particles, depending upon the pore of the membrane you want to use, are being retained by the outside of the membrane, और क्लीन एयर पास कर जाएगी। इसके बीच में परफोरेशन है ना बेटा, मैंने अभी बताया था, ये देखो परफोरेशन है ना। तो परफोरेशन के थ्रू क्लीन एयर पास करके यहाँ कलेक्ट होती जाएगी ऊपर, एंड द क्लीन एयर गोज आउट। वेयर एज द डस्ट कलेक्टेड ओवर हियर, दिस कॉल्ड डस्ट केक, इसको बोलते हैं हम डस्ट केक। तो डस्ट केक इज बीइंग collected at the bottom। कैसे कलेक्ट करना आगे बता रहा हूँ इसके लिए, एंड इट इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट्स अ वेस्ट, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। इसके वेस्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है बेटा ये चीज। ओके, सो दिस इज बैग हाउस फिल्टर। सो दिस इज नो डाउट सीम्स टू बी वेरी गुड, बट it is very like expensive to operate. Why? Because membrane is very fine. So the for functioning of these kind of particular bag house or particular filters or fabric collectors, you need a large pressure drop, large pressure। ठीक है, आपने +2 में या यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं कभी भी, तो आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हम फिल्टर रखते हैं, याद है आपको। तो फिल्टर में हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो आप देखोगे 2 या 3 मिनट के बाद फिल्ट्रेशन बहुत स्टॉप हो जाती है। व्हाई? बिकॉज योर मेम्ब्रेन इज क्लॉग्ड, ये फिल्टर पेपर इज क्लॉग्ड। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है बेटा। तो जैसे जैसे आपका डस्ट बाहर डिपोजिट होती जाएगी, प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, आपको प्रेशर और ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग कॉस्ट इंटेंसिव phenomena or process in which a lot of energy is being consumed. But advantage is you are getting a particle removal which can't be removed by a cyclone or other particular mechanisms or equipments. So this is used, bag house is used in most of the industries where the particle size is near about 10 micron or less than 10 micron. Okay, so all these things which I have explained to you are written over here. Please, you can go through. Okay, so 99% efficiency for very fine particulates. This bag can be, the bag can be woven or felted cotton, means जो membrane बनी हुई है बेटा, it can be synthetic nylon की हो सकती है बेटा, polyester की हो सकती है, it can be glass fiber also because glass fibers can also used for make a membrane. Okay, जो मैंने आपको ट्यूब के अराउंड बताया, मैंने ये ट्यूब है ना, ट्यूब के अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो चीज। तो डाउट है इसमें, कुछ पूछ लेना बेटा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जस्ट गो थ्रू दिस वेरी फास्ट, जो आपको बताने वाला हूँ। तो अब डस्ट कैसे कलेक्ट होती है बेटा, उसका मैकेनिज्म क्या है। 4 बेसिक मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ आपको। 4 मैकेनिज्म है, इनिशियल कलेक्शन, इंटरसेप्शन, ब्राउनिंग मूवमेंट और एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस। ओके, अब समझो कैसे है, समझा रहा हूँ, फिर आगे मूव कर जाऊंगा बच्चे। नाउ what I want to
show you, what I'm to tell you, what is being written over here, how the particulates, particulate matter that is 10 micrometer or less than 10 micrometer present in the air are being collected in the bag house. What is the mechanism? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसके बारे में, ठीक है? तो वे देयर आर बेसिकली फोर मैकेनिज्म बाय व्हिच द पार्टिकुलेट मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर व्हिच यू वांट टू कलेक्ट आर बीइंग कलेक्टेड. दोस मैकेनिज्म आर दिस वन. सी दिस, देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये मेम्ब्रेन है बेटा. मेम्ब्रेन क्या है बेटा? एक जाली है आपकी, आपके घर के डोर में जाली लगी हुई है ना बेटा, वो भी एक मेम्ब्रेन है बच्चे. तो वो भी सेम फंक्शन पे काम करेगी. लेकिन हाँ, जिसमें यहां बात कर रहा हूं ये बहुत फाइन है बेटा, इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी फाइन. तो फर्स्ट इज इनर्शियल कलेक्शन. इनर्शियल कलेक्शन में क्या होता है बेटा? सी दिस, दिस इज अ मेम्ब्रेन, dirty air is coming in. When the dirty air is coming in, say this, the dirty air is coming in. Now the dust particles, this is a dust particle. Now due to inertia of motion or inertia of rest, the dust particles keep on traveling in a straight line. Where the gas stream, they travel in straight line. Once they have this kind of membrane, they transfer the direction and pass through this membrane. आपने घर में देखा होगा जाली, आपकी जाली, वहीं पे एग्जांपल देता हूं, आपके जाली में से फ्रेश एयर अंदर आ जाती है लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं रिटेन हो जाते हैं. तो आपने कभी देखा होगा एक साल के बाद आपकी जाली बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है. कैसे ब्लॉक हो गई? क्योंकि आपकी उस जाली ने, उस मेम्ब्रेन ने, आपके उस मेम्ब्रेन ने डस्ट पार्टिकल रिटेन कर लिया और क्लीन एयर अंदर आ गई. वो कैसे मैकेनिज्म है? जो एयर में पार्टिकल्स हैं, they will keep on traveling in straight lines due to inertia of rest because they have mass. So when they keep traveling on straight line, they strike the wall, they strike the jali, they strike the membrane. When they strike the membrane, they gets removed. Whereas the gas continue to travel like in a streams like this, and they pass through that membrane and they will get through the membrane. Where the dust particles, due to inertia of rest, due to its mass, cannot transverse this direction. It keep on traveling in straight lines. Once it keep on traveling straight lines, it's going to impact this kind of membranes. Once it is impacted over here, they are removed. Clean gas pass होगी बाहर निकल जाएगी. And this is called inertial collection. Inertia force हो गया ना, inertia of rest, inertia of motion. This is a inertia of collection, inertial collection. ठीक है जी. Then interception. अब आपके उस पर्टिकुलर गैस स्ट्रीम में डिफरेंट साइज है, डिफरेंट शेप है. ऐसा तो है नहीं है कि उसमें एक ही पार्टिकुलेट मैटर होगा जिसका सेम साइज है, सेम शेप है. नो, इट कैन हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज. तो वो कैसे रिमूव होंगे? पहला है, some of the particles are being removed by the inertial correction, some of the particles are removed by the interception. Interception क्या होता है बेटा? पोर साइज से जो बड़ा है, the particles which are bigger than the pore opening are retained, and the particles which are small than the pore opening, they get removed. Are you getting it? I'm again repeating. Interception is, आपकी जाली घर में देखी होगी ना बेटा, वही मेम्ब्रेन है, उसको ज़ूम कीजिए. The particles which are present in the air, which are bigger in size than the pore size, are retained. Which are smaller in size than the pore size of the membrane are being passed through. This is called interception. Okay. Then Brownian movement, you know very well. Very fine size particles. Otherwise, they could have passed through the membrane, but they are removed. Why? Because of the Brownian movement. Why? Very fine size particles, they keep on moving in a zigzag manner. And during their zigzag motion, they're going to strike the membrane. Once they strike the membrane, they're getting removed. This is called Brownian movement. Okay. And then electrostatic forces, you know very well. Because your membrane is also charged and your particles are also charged. So somewhere there's electrostatic forces of attraction also. जैसे आप घर में नहीं करते बेटा वो कोब वाला, कोब को चार्ज करके आप गेटिंग इन मैग्नेटाइज्ड, तो वही है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं इसके लिए. ठीक है. तो आपके फिल्टर का भी आपका वो है और आयंस के जो है वो भी चार्ज हैं. सो समहाउ दे ऑपोजिट आयन दे गेट attracted and gets removed. So these are the four basic mechanisms talking about when you're talking about fabric collectors. Okay. Is that okay, everybody? So this is how the
क्लीनिंग मेथड मीन्स, अब आपको मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था, फटाफट याद कर लो बेटा, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपके फैब्रिक पे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसको डस्ट केक बोलते हैं। अब डस्ट केक को रिमूव कैसे करना है, तो रिमूव के टू मैकेनिज्म है, ये रहे आपकी। सो फैब्रिक कलेक्टर दे आर बीइंग क्लासिफाइड बाय क्लीनिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस। इट कैन बी मैकेनिकल शेकिंग, इट कैन बी रिवर्स एयर, इट कैन बी रिवर्स जेट। क्या होता है बेटा ये मैकेनिकल शेकर? मैकेनिकल शेकर इज लाइक ऑल सी दिस, ये देखो, जितने भी आपकी मेम्ब्रेन जो मैंने बताए थे सब अटैच है ऊपर एक मैकेनिकल उसके साथ, शेकिंग मैकेनिक के साथ। इसको मैं शेक करूंगा, वायरली शेक करूंगा, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स में अटैच हो रखे हैं सारे गिर जाएंगे नीचे, गेट कलेक्टेड। ठीक है। सेकंड इज रिवर्स एयर। रिवर्स एयर क्या है बेटा? उल्टी डायरेक्शन से, देखो उल्टी डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, यहां से अब मैं क्या करूंगा, एयर पास करूंगा उल्टी डायरेक्शन में। तो जैसे उल्टी डायरेक्शन पास करूंगा तो एयर यहां से जाएगी थ्रू परफोरेशन, ये डस्ट केक को स्क्रैप ऑफ कर देगी। करते हैं ना हमेशा उल्टा, रिवर्स एयर मारने के लिए, जो ब्लॉकेज हटाने के लिए करते हैं हम। कई बार एक पाइप ब्लॉक होती है तो हम उल्टी डायरेक्शन से या तो हवा मारते हैं या पानी मारते हैं। सेम थिंग इज हियर आल्सो, रिवर्स एयर रिवर्स जेट। बाय बिकॉज बेटा ये मेम्ब्रेन को क्लीन करना है, मेम्ब्रेन बहुत कॉस्टली है आपकी, जो रैप कर रखी है उसके अराउंड, पाइप के अराउंड। हर बार आप यूज करके फेंक थोड़ी दोगे उसको, तो आप चाहोगे डस्ट केक निकल जाए, डस्ट केक फेंक दें और जो मेम्ब्रेन उसको यूज कर लें। तो या तो शेकिंग मैकेनिज्म है, शेकिंग से नहीं होता तो रिवर्स एयर, रिवर्स एयर से नहीं तो रिवर्स जेट। Okay, so this is a cleaning mechanism by which you can use this thing. So I'm explaining to you, you please go through this thing in detail also, please, and if you have a problem you can come back to me. Then electrostatic precipitator, this is another ASP, but I'm not going to explain this. This you have to read yourself, all of you, because everything will not be spoon fed to you. Okay, so I'm explaining from the beginning till end everything. So something we always keep for students so that they can go through. अब है क्या बेटा, इसको एक बार बता दूं आपको क्या है, ये रहा, पढ़ लोगे इसको बेटा। कोई डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर बेटा फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। सेम मैकेनिज्म है बेटा, उसमें क्या है मैं बताता हूं आपको, फिर इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा बेटा, दो तरह के होते हैं बेटा, ट्यूबुलर होते हैं और प्लेट प्रेसिपिटेटर होते हैं। अब होते क्या, देखो ये प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, एक तरह की इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, बिकॉज हम इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जनरेट करते हैं इसके बीच में, बहुत हाई वोल्टेज पे। तो एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है बेटा, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू रिमूव वेरी फाइन साइज पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी इवन रिमूव्ड बाय द बैग हाउस। बैग हाउस में अगर 5 माइक्रोन से कम हो जाए ना बेटा, वो रिमूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रिमूव कर पाएगा? बिकॉज मेम्ब्रेन आप कितनी फाइन लेके आओगे, जितनी फाइन लेके आओगे तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स नो बेटर। ओके, तो उस केस में बच्चे आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या लेके आओगे। तो उसके लिए बेटर है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज कर लें, although this is again very expensive but you don't have any options. And when you go to industries you come to see these kind of things usually over there. अब है क्या बेटा, सुन लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या है, कुछ नहीं करेंगे, we have electrodes, we apply a high voltage over here, high voltage near about, depending on application, 10,000 volt. When you apply this high voltage, what will happen? The gas stream which is being fed over here, see this with dust particles, the gas stream with dust particles get ionized, with charged. So when they get ionized or charged with opposite ions with high voltage, you know very well, they will be either have cations, they will be having an anions or negative charge or positive charge, and accordingly these electrodes are cathode or anode, so they will be getting attracted towards opposite electrodes, and once they get attracted towards opposite electrodes, they're getting removed. And this is overall fundamental in electrostatic precipitators. So you can go through better these kind of things which I have explained to you. See this, okay? So electrostatic precipitator use electrostatic forces to separate dust particles from the exhaust streams. अब वही मैं जो बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आगे मूव कर जाऊंगा, बाकी खुद पढ़ लेना बच्चे। A number of high voltage, अभी बताया था, direct current DC current discharge electrodes are placed between the grounded electrode collection electrodes. Okay. Now airborne particles, कौन से airborne particles जो उसमें क्लीन करना है, receive an active charge as they pass through the ionized field between the electrodes. These charged particles then attracted towards a grounded or positive charge, that is cathode, and get adhere to it. Once I get adhere to it, it's getting removed.
So this is overall funda when talking about your electrostatic precipitators. I recommend that you should go through it very fast. Fine. So please, I'm requesting you. Everything will not be spoon fed to you. Something is there for your own reading. You go through it, and you will be getting a very good question out of it. And still, you have any doubt, you can ask me later on also. Okay. So I have a recording there in LMS also, so you can go through recording also, beta. And if by reading you are not getting something, what is electrostatic precipitator, although I have explained to you, I have enabled or uploaded a video on electrostatic precipitator, a recorded lecture on LMS. Please go through it. And second thing, bete, I have also uploaded certain tune sheets regarding the water pollution, the vehicles we have executed on LMS. Please go through these tune sheets along with solutions. I think so I have provided, so you can practice yourself by doing these numericals. Okay. And please note down this thing, all of you, because on the basis of this we are going to do certain numericals. Betty, note down this. So this is the collection efficiency of electrostatic precipitator. Okay, the collection efficiency is like this. Note down, because you will be getting a numericals on the basis of this. So collection efficiency is being given by this formula: 1 minus this exponential raised to power this one. So this eta is the fraction collection efficiency. AC is a collection इलेक्ट्रोड एरिया. तो अगर हम प्लेट ले रहे हैं बेटा, प्लेट में होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ध्यान से रखना. अगर हम सर्कुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ले रहे हैं तो सरफेस एरिया का 2 पाई आर एल, मेरे ख्याल से देख लेना. ठीक है जी. सो कलेक्टेड एरिया VPM. VPM is a particle migration velocity. Particle migration velocity is when it is charged through high voltage, how the particles are being migrated towards the cathode or electrodes. How the particles are being, और जितना फास्ट मूव करेंगे उतनी फास्ट सेपरेशन है आपकी बेटा, जितना स्लो करेंगे उतनी स्लो सेपरेशन है. ठीक है. सो इट्स अ पार्टिकल माइग्रेशन वेलोसिटी. एंड देन Q इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एयर. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मींस कितना मीटर क्यूब पर आवर इसमें फीड कर रहे हैं बेटा. एंड दिस इज इक्वल टू एरिया इनटू velocity. Always volumetric flow rate is always equal to area into velocity. Okay. So you remember this formula. We'll be doing certain numericals on this basis. Okay. Is that okay, everybody? Doubts, eh? So you can take your doubts before the class ends. Otherwise, I told you always there are recorded videos on LMS. Slides are there on LMS. You can go through, bache, all of you. So I have uploaded all the slides on LMS. If you not able to find those kind of things, just let me know. I'll recheck once again. Although I have uploaded each and everything on LMS, including tune sheets on water pollution. Okay. So the last category in APCD is the wet scrubbers. ये क्या है समझाने वाला हूं आपको. The last category in APCD is the wet scrubbers. अब wet scrubbers क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले ऊपर एक जो ग्रीन लाइन है वो पढ़िए बेटा. These wet scrubbers are only the APCDs which are used for both removal of particulate and gaseous pollutants. तो पीछे हमने डिस्कस किया बेटा, पीछे को डिस्कस किया हमने, that was used for only particulate. Okay. There are some which can use, there are particular scrubbers which can remove only gases somewhat. But these wet scrubbers are used when you are both gases as well as particulate matter present in the air, and we want to remove both at the same time. Then you have wet scrubbers. So please listen to these points very carefully and videos carefully. Why? Because when we put question in exam, we put general question in this way.
explain in detail the working and construction features of air pollution control device which is used for the removal of both particulate and gases pollutants. Now, indirect question. So, if somebody have explained the wet scrubbers, he will get full marks depending upon what he has or she has wrote. बट अगर किसी ने इसमें साइक्लोन लिख दिया, सीधा क्रॉस जीरो, ग्रेविटी सेटलिंग सीधा क्रॉस जीरो, बैग हाउस सीधा क्रॉस जीरो, बिकॉज पूछा क्या हमने, explain in detail the construction and design features of air pollution control device which is used for both removal of particulates as well as gases pollutants. So at the time when the indirect question is being sought or being asked to you, you must be very particular which thing you have to write. Okay, so this is the only APCD which is going to use for removal of both particulate matter as well as gases pollutants. So particulate means PM control, gases means you're going to use either the fumes, vapor, gases like this depending on industry, and it can be VOC also, volatile organic carbons. अब होते क्या है बेटा, पढ़ लो इसको एक बार समझा दूं। अगर आपको समझाना है एक बार पढ़ लो इसको एक बार, बाकी मैं समझा भी देता हूँ आपको बेटा। आपको कई बार देखा होगा आपने बेटा, रोड साइड पे जो आपकी मेन रोड पे या हाईवे पे आपकी शॉप्स होती हैं, जो हमने क्या करते हैं सुबह सुबह या दोपहर के टाइम या इवनिंग पे वहां पे पानी स्प्रे कर देते हैं। बहुत शॉप्स देखी होंगी आपने ना, वो स्क्रबिंग है बेसिकली, करते हैं ना बेटा, वो पानी स्प्रेड आउट कर देते हैं, वो कप के साथ ऐसे से मार के कर देते हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं बेटा, वो करके इसलिए रहे हैं कि उस एयर में, सराउंडिंग एयर में, शॉप के सामने जो डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंड हो रखे थे सब सेटल हो जाएंगे। यही पर्पस है बेटे, सब सेटल हो गए तो दिस मींस जब रोड पे कोई व्हीकल चलेगा, तो जब व्हीकल चलेगा वो रोड सस्पेंड, सॉरी वो मिट्टी जो है, वो सैंड जो है या डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंड एयर में है वो सेटल हो गए, वो उनकी शॉप में एंटर नहीं करेंगे। घरों के सब बाहर भी करते हैं नॉर्मली, बहुत लोग हैं जो ओल्ड विलेज उसमें रहते हैं, विलेज में रहते हैं, मोहल्ला में रहते हैं, वो दे यूज्ड टू स्प्रे द वाटर एट देयर डोर स्टेप्स इन द स्ट्रीट। सो दिस इज स्क्रबिंग बेसिक। अब वही फंडा यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। देखो जरा, dust collectors that use liquid, so dust collectors which are using liquid are commonly known as wet scrubbers. Most of the application, the scrubbing liquid is a waste, is the water. Okay, so वही बात वही ना, that water comes in contact with gas stream containing dust particles, वही चीज बता रहा हूँ अगर आपको समझ आ रही है ना। अब सीधी सी बात है, जितना बेटर कंटेक्ट होगा उतनी बेटर सेपरेशन एफिशिएंसी होगी। अब एग्जांपल फिर घर वाली पे आ रहा हूँ। अब घर वाले में अब जब शॉप के सामने आप कप डाल रहे हो पानी का, अगर कप ऐसी फेंक दोगे, एयर में फेंक दोगे, तो कितना कप का पानी जो है एयर के कंटेक्ट में आ जाएगा। बट नॉर्मली क्या करते हैं लोग, उसके आगे फिंगर्स रख के, कप के ऊपर फिंगर्स रख के उसको फिर स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा जब कप, तो दिस मींस अब पानी जो है मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया, वो फिंगर रख दी उसके ऊपर, आपने रख दिया फिंगर्स, तो उससे और सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ने का पर्पस ये है कि मैक्सिमम वाटर जो मैक्सिमम एयर के कांटेक्ट में आया, जितना कांटेक्ट में आया उतने डस्ट पार्टिकल ज्यादा उससे कांटेक्ट करेंगे, जितना कांटेक्ट ज्यादा करेंगे उतनी सेपरेशन ज्यादा होगी। So greater the contact of the gas liquid, higher the separation. Okay, I hope so I'm able to communicate to you what I want to say and what the slides are saying, what the technology is saying. Okay, सो आगे बता रहा हूँ, ये थोड़ा वेट कर लो कि क्लीन गैस आर नॉर्मली पास थ्रू एलिमिनेटर क्या है अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट करना, ठीक है। और डर्टी गैस नीचे से रिमूव कर देते हैं बेटा। डर्टी वाटर जो है, सॉरी वाटर नॉट गैस, वाटर इज आर द क्लीन और डिस्चार्ज। ओके, सो अगेन मूविंग टू दिस स्टेप, पहले मैकेनिज्म क्या है फिर हम आगे मूव करेंगे बेटा। So there can be a large variety of gas wet scrubbers used in industry depending on design, depending on application, depending on requirement. So सबके तीन बेसिक ही मैकेनिज्म हैं जो आपको मैंने अभी बता के चुका हूँ, अभी बताया मैंने, है ना। गैस ह्यूमिडिफिकेशन, जितनी ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा करोगे, ओके, गैस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस conditions fine particulates to increase the size. Once they increase in size, they can be collected more easily. This is how you go to the humidification. You know ह्यूमिडिफिकेशन ना, हम कहते हैं ना जब डस्ट बहुत होती है एयर में तो बारिश पड़ जाए तो उसके बाद आपका वो हो गया, तो ह्यूमिडिफाई हो गया वो चीज। देन
gas liquid contact. So more the gas liquid contact, more will be the separation. Why? Because dust particles will find more particular liquid at more areas so that they can attach to that and gets removed. And no doubt, once you have all these kind of things, then a gas liquid separation. Why I'm saying gas liquid separation? बेटा सी आगे बताने वाला हूं. बेटा गैस लिक्विड सेपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो लिक्विड है ना बेटा, आप फेंकोगे नहीं. लिक्विड जो बिल्कुल फ्री हो गया उसको हम रिसाइकल बैक करना चाहेंगे. ओके. So you want to remove dust particles and recycle as much of liquid you can. Okay. So these are the three basic operations when you're talking about wet scrubbers. So again, the same thing, beta, which I've explained to you like in the last slides. What are the mechanism by which the dust particles are being removed? They are basically three mechanisms. What? Impaction, diffusion, and absorption. ये मैं बता रहा हूँ अभी. ये मैं आपको बता चुका हूँ. ये क्या है? ये है, देखो जो भी बताया था मैंने. सो दिस है वाटर ड्रॉपलेट. अब कहाँ से आएगा ड्रॉपलेट बेटा? स्क्रबिंग में क्या होगा? ड्रॉपलेट ही है. इमेजिन करो जो आप स्प्रे कर रहे हो शॉप के सामने, घर के सामने, जैसे स्प्रे कर रहे हो आपके हवा में छोटे छोटे ड्रॉप वाटर के आ जाएंगे बेटा. आ जाएंगे ना बेटे. बारिश पड़ती है तो हवा में क्या आता है? ड्रॉप आते हैं किसके? वाटर के. सेम अगर मैं कप से स्प्रे कर रहा हूँ वाटर शॉप के सामने, घर के सामने, तो एयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट आ गए और ये रहा वाटर ड्रॉपलेट जो मैं स्क्रबिंग में यूज करने वाला हूँ. सेम फंडा. गैस स्ट्रीम आ रही है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं. डन. अभी बताया था. नाउ ड्यू टू इनर्शिया these dust particles they keep on traveling in straight line, whereas a gas stream they follow the path to get this way. Whereas the dust particles, due to mass, they keep on traveling in straight lines. Once they keep on traveling straight lines, they they are getting attached to water droplet and gets removed. Okay, same thing जो मैं आपको लास्ट में बताया है, अभी लास्ट स्लाइड में बताया. So impaction will be more. Why? How? As a diameter of particle increases, जितना particle डाया है उतनी बड़ी है सेपरेशन है. ठीक है. And the relative velocity between the particle increases always. And liquid droplet decreases. Liquid droplet decreases means जितना particle size कम होगा उतना surface area ज्यादा होगा. You must be agreeing with me. Okay. So diffusion, I think so. I told you diffusion is basically same thing, Browning movement. That is irregular motion. ये देखिए, this irregular motion cause the particles to collide with the water droplet and be collected. आ गया. Gas stream they follow the streamlines and goes away. I hope you have understood what I want to explain before also and this time also. So I'm showing you actually how it is happening. But later on you can ask me. Okay. And then last is absorption. Now absorption is basically, or absorb, not absorption, absorption. Absorption is basically dissolving gases, pollutants and liquid. अब सीधी सी बात है, मेरे सिस्टम के बीच में SO2 है, मेरे सिस्टम के बीच में NO2 है, मेरे सिस्टम के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको मैं रिमूव नहीं करना चाह रहा, जिसको मैं सॉरी इमिट नहीं करना चाह रहा इंडस्ट्री के बाहर. मेरे को कंस्ट्रेंट्स मिली हुई हैं बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी. तो मैं क्या करूंगा? इसको रिमूव करूंगा. सो आई वांट टू चूज अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. बेटा कौन सा सॉल्वेंट यूज करूंगा? ऐसा सॉल्वेंट यूज करूंगा जिसमें वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी. सपोज मेरे प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्री में आप प्रोसेस कर रहे हो इंडस्ट्री के बीच में, और उस इंडस्ट्री में आपको पता है कि SO2 बहुत बन रही है, ये आपको पता है. Now you are the owner, you are the proprietor of the industry, you know what's our process I'm using in the industry, what's our process I'm using in the industry. SO2 is released in a high quantity, so I cannot release this SO2 as such in the atmosphere. Okay, so what I want to do, I want to choose one solvent, particular solvent in that SO2 is highly soluble. ठीक है. तो SO2 अगर soluble है उसमें, अगर दोनों का कंटेक्ट करवा दूं मैं, दोनों का कंटेक्ट करने से क्या होगा? SO2 जो गैस फॉर्म में है वो सारी शिफ्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में. क्यों? लिक्विड जो है सॉल्वेंट जो मैंने अभी यूज करने वाला हूं, वो सॉल्वेंट गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब आउट करवा लेगा. तो क्लीन गैस बाहर निकल जाएगी और डर्टी लिक्विड नीचे आएगा, जो उसको मैं रिकवर करके SO2 निकाल दूंगा. कैसे आगे बताने वाला हूं आपको. ओके. बट सबसे बड़ा फंडा क्या है इसको यूज करने का? कि सोलबिलिटी होनी चाहिए. सोलबिलिटी कम है तो भाई साहब आप पंगा लेके बैठ जाओगे, आपका सॉल्वेंट बहुत यूज हो जाएगा आपका.
क्यों? सॉल्युबिलिटी पहली कम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सी दिस, सॉल्युबिलिटी गवर्न्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड, गैस लिक्विड रेशियो, लिक्विड टू गैस रेशियो एंड नेसेसरी कांटेक्ट टाइम, तो कांटेक्ट टाइम भी कम हो जाएगा। मोर सॉल्युबल मींस लेस लिक्विड, लेस टाइम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। तो जितना बढ़िया सॉल्वेंट लोगे आप, कौन सा सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास SO2 नहीं कर रही इंडस्ट्री के बीच में, आपको सॉल्वेंट की दो ऑप्शन है, ए और बी। ए कॉस्टली है, बी बहुत लेस है। तो दोनों पंगे पड़ सकते हैं। आपने लेस कॉस्टली ले रही है पंगा ना, अभी मेरे पास सॉल्वेंट यूज बहुत लगेगा, मेरा सॉल्वेंट बहुत कॉस्टली है, तो भाई जो लेस सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्युबिलिटी SO2 की कम है, तो आपको प्रोसेस का ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सॉल्वेंट ज्यादा यूज होगा तो खर्चा वहीं पे आ गया बच्चे। तो जब खर्चा वहां पे आ गया तो यू कैन यूज द बेस्ट सॉल्वेंट कहाँ पे, जहां पे लिक्विड रिक्वायरमेंट, सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, ताकि कम से कम सॉल्वेंट में मैक्सिमम सल्फर डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाए और टाइम भी कम लगे। क्यों टाइम कम लगे? क्योंकि जितने टाइम तक ये प्रोसेस चलेगा उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी सिस्टम के बीच में, और उतनी बार पंप चलेंगे, ब्लोअर चलेंगे, है ना। तो उस केस में आई एम सेइंग दैट मोर कांटेक्ट टाइम मींस मोर एनर्जी कंजम्पशन, मोर एनर्जी यूटिलाइजेशन व्हिच वी डोंट वांट। सो दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, पढ़ लो इसको एक बार। ओके, सो अब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, बता चुका हूं, इसके बीच में डिटेल दे चुका हूं। सो अब्जॉर्प्शन मींस अभी बताया, ट्रांसफरिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम गैस फेज टू कॉन्टैक्टिंग सॉल्वेंट। ठीक है जी, अब ये क्या है मैं सब आगे बताने वाला हूँ जो लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो, जो चाहे पिक्चर क्लिक कर लो चाहे LMS से ले लो। इसकी डिटेल जो अकेले के लिए पॉइंट डिटेल है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाला हूँ आपको, वाइंड अप कर दूंगा फिर। ठीक है, सो ये है आपका सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। करो फटाफट इसको स्टडी। अब सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नो डाउट हाई द सॉल्युबिलिटी, आ गया ना ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई द सॉल्युबिलिटी, लोअर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। सॉल्वेंट शुड बी नॉन वोलेटाइल। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सॉल्वेंट ही वोलेटाइल हो गया तो सॉल्वेंट ने गैस को रिमूव तो क्या करना है, अपने आप को ही वोलेटाइज करवा लेगा। तो दिस मींस जो ऊपर गैस निकल रही है उसमें अब और कंस्टिट्यूएंट आगे, कौन से आगे, सॉल्वेंट के आगे। मेरी बात समझ रहे हो? सपोज बेंजीन ले लिया, बेंजीन कैन बी वेरी गुड सॉल्वेंट, अरे बेंजीन खुद वोलेटाइल होकर ऊपर गैस में चला जाएगा, तो जो ऊपर क्लीन गैस ऊपर जा रही है, क्लीन गैस में बेंजीन भी चला गया, तो यू आर मेकिंग गैस डर्टी। So these are the points which you must take care while selecting a solvent.